बजट कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था केवल बजट का. वी डिड नॉट गो इनटू द nitty-gritties ऑफ इट एंड टुडे विल ट्राई टू कंटिन्यू फर्दर. बजट सीरीज में आई विल नॉट गो अहेड एंड गिव यू एवरी डिटेल इन द सिंगल इंस्टेंस. ठीक है, व्हाट आई विल डू इज इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आज शाम तक आप लोग को मिल जाएगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट क्लियर. ठीक है, जो यहाँ पे ये सब देख के क्लियर नहीं होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू जस्ट हैव टू गिव अ रीडिंग टू दिस डॉक्यूमेंट. इफ यू टेक अ लुक, काफी ढंग से एक्सप्लेन करा भी गया है, सारे रिलेटेड टर्म्स भी. देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर जस्ट नॉट इन योर अंडरस्टैंडिंग, उनको मैं थोड़ा समझा दूंगा. टुडे आई थिंक विल डू द फर्स्ट 2 पेजेस ओनली. देन शाम तक आप लोग को ये मिल जाएगा बजट का कॉपी. आफ्टर दैट यू कैन, आज हम लोग यहाँ तक करेंगे जहाँ तक है. ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग से कल पिक करेंगे, तो कल एक साइड से लगभग आई थिंक 70% तक खत्म हो जाएगा बजट. ठीक है, all you have to do is today take a printout of these sheets. Around 25 pages are there. Printout नहीं तो किसी screen पे ही सही, but एक बार पढ़ लेना. Just give it a reading once. There will be terms which you will understand, there will be terms which you will not understand. I will explain to you everything tomorrow, whatever doubts you might have, but just give it a reading once. That is the best and most effective way of learning. ठीक है, चलो. अब कल हमने वॉकलेट डे की सब बात कर करा के बजटिंग सीखी थी और हमने बताया था कि कैसे लड़कों की बजटिंग खराब थी, इसीलिए हमारी निर्मला मैम ने बजट बनाया इस बार का. कैन यू टेल मी इफ इट इज अ कंट्रैक्शनरी बजट या फिर एक्सपेंशनरी बजट? कौन सा बजट है ये? एक्सपेंशन. एक्सपेंशनरी सर. करेक्ट. एंड इफ अ बजट इज एक्सपेंशनरी इन नेचर, तुम लोगों ने इकोनॉमी तो पढ़ी रखी होगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जब एक्सपेंशनरी इन नेचर होती है, जब सरकार ज्यादा खर्चे करती है, तो डज इट लीड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट सर. इनिशियली एम्प्लॉयमेंट सर, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट करता है. इनिशियली एम्प्लॉयमेंट. Generally we will say that it only leads to employment. वो unemployment का reason अलग है, that becomes cyclical in nature. ठीक है, वो employment unemployment का cycle है. But what does it do is, सबसे पहले सोचो सरकार ने, if the government is spending more, ठीक है, खर्चे ज्यादा करने शुरू करें, तो what would happen is the demand will be met. उस हिसाब से factories will have to employ more people, क्योंकि सरकार खर्च कर रही है पैसे, तो सप्लाई भी तो करेगी गुड्स आप सरकार को. If you're supplying the goods to the government, you'll have to hire more people. If you hire more people get salaries. If more people get salaries, in that case, demand जो यहाँ पे demand का vacuum create हुआ था, that automatically gets filled in. जब ये demand का vacuum fill हो जाएगा, तो अपने आप ही चलने लगेगा. So can you see that in this case, the government is only giving a stimulus, an initial stimulus, and not a permanent relief. ठीक है? So that is why we have come out with a expansionary budget. Now I'll try to tell you previous year से लेके अब तक का क्या हुआ. बजट के अंदर देर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. बजट स्पीच के पार्ट ए विल टेल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू इन द कमिंग फ्यू इयर्स. ठीक है, पार्ट बी विल ओनली टॉक अबाउट द टैक्स प्रपोजल्स. जनरली हम लोगों का सारा ध्यान जो होता है पार्ट बी पे आकर्षित होता है, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड विद टैक्स प्रपोजल्स. बट एक्चुअली आपके एग्जाम पर्पज से व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज पार्ट ए ऑफ द स्पीच. पार्ट ए के स्पीच में सबसे पहले द फाइनेंस मिनिस्टर गेव अ लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ द इंफॉर्मेशन. Now, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was launched to help the poor people who were affected the most by the COVID-19. During that, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was created, and it was valued at INR 2.76 lakh crores. It provided food grains to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and thereafter cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, poor, and the needy. इतने लोगों को इस स्कीम के अंदर पैसे दिए गए. दिस इज अ इमेज फ्रॉम जून और जुलाई. ठीक है, जून या जुलाई से कभी. तो इन दिस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गरीब कल्याण योजना आर गिवन. तो गरीब कल्याण योजना को यहाँ से पढ़ लेना आप. टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस जो था, इंक्लूडिंग मेजर्स टेकन बाय आरबीआई, इट वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट INR 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of the GDP. Now you can automatically understand that if we are spending 27.1 lakh crore rupees, okay, this money was actually to go towards infrastructure development and others, wherein we had to simply give it out as subsidies, and this was 13% of our GDP which we spent on supporting people. अगर हम टोटल अपनी इकोनॉमी का कंट्रैक्शन देखें, तो दैट वाज समवेयर अराउंड कितना 7 to 8% का कंट्रैक्शन था, गिवन बाय वेरियस सोर्सेस. अभी भी डेटा जो एस्टिमेटेड ही है, 7 to 8% का ओवरऑल श्रिंकेज हुआ है हमारी इकोनॉमी में.
even if we went for 7 to 8% का shrink, you see that we have spent 13% of our GDP on what? Relief measures, which means our economy was not in so bad situation. The situation was not so bad. But COVID की वजह से सारी कहानी खराब हो गई. अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, they have quoted a literature, Fireflies, which is a collection of aphorisms. It has been written by Rabindranath Tagore ji. So faith is a bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. मतलब सुबह होने से ठीक पहले एक चिड़िया है जिसको पता लग जाता है कि दिन होने वाला है, वो अंधेरे में गाना गाना शुरू कर देती है. दैट इज फेथ. ठीक है, उसे ट्रस्ट और फेथ बोला जाता है. अब रविंद्रनाथ जी क्यों है, ये तो आप ऑब्वियसली आप जानते हो. वल्लभ और रविंद्रनाथ जी पे ही क्यों फोकस किया गया? ऑब्वियस रीजंस. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस बजट विल बी द फर्स्ट ऑफ दिस न्यू डेकेड. ठीक है, नए डेकेड स्टार्ट हो रहा है 2021 से. सो उसमें ये पहला बजट आया है. इट इज द फर्स्ट डिजिटल बजट ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई अप्रिशिएट दिस बिकॉज अननेसेसरीली बजट की कॉपीज प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है. when we are trying to save trees, when we are trying to curb expenditure, all these cases में budget को digital बना देना is actually a good thing. So far only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. And funny thing is that 1962 was not one of those. ठीक है, 62 में या 63 में ऐसा नहीं हुआ कि बजट कॉन्ट्रैक्शनरी इकोनॉमी रही हो. इनफैक्ट ग्रोथ हुई थी उस टाइम पे. ये 3 कॉन्ट्रैक्शन जो पहले हुए हैं, दैट इज इन 1965, 1972 एंड 1979. ये फोर्थ ऐसा बजट है जहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी हुआ है या इकोनॉमी ने एक नेगेटिव ग्रोथ रेट शो किया है. ठीक है, आफ्टर दिस नेगेटिव ग्रोथ रेट वी हैव हैड टू कम विद अ बजट सो दैट इकोनॉमी कैन रिवाइव. प्रॉब्लम ये है कि पिछली 3 बार व्हेन इट हैपेंड दिस वाज ओनली ड्यू टू डोमेस्टिक रीजंस. But this time, it is the global economy which has been shattered. And when the global economy has been shattered, you really cannot watch out for help. आप बाहर से मदद नहीं मांग सकते हो, आपको अंदर से मदद चाहिए. ठीक है, you need to improve yourself. But this time, there is one more challenge. Previously, India was seen at the receiving end. This time, India is also seen at the giving end. हमारे नेबरहुड के लिए हमसे बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. सो इफ द इकोनॉमी ऑफ द नेबरहुड कोलैप्सेस, दैट कुड लीड टू इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन फॉर देम एंड थ्रेट टू अस. अगर सपोज करो नेपाल के अंदर इकोनॉमी क्रैश हो जाए, मिलिटेंट्स बढ़ जाएं, डोंट यू थिंक इट कैन बिकम अ इजी टारगेट फॉर पाकिस्तान टू रिक्रूट नेपाली यूथ एंड thereafter send terrorists to India? This is exactly what has happened in the past. नेपाल की इकोनॉमी क्रम्बल करी माओइस्ट रेवोल्यूशन के चक्कर में. उसके बाद में बहुत ज्यादा नेपाल की जमीन का यूज होने लगा इंडिया के खिलाफ. आज भी नेपाल के थ्रू होके ही इंडिया में मैक्सिमम टेररिस्ट एंटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 2021 is a year of many milestones. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of 1971 Indo-Pakistan War, the year of 8th independent census of India, then India's turn at the BRICS presidency, year for Chandrayaan 3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. I want your preparation to be holistic, and I do not want you to miss out on any questions if they come from the budget whatsoever they are, which is why if you go to the last part of this budget document, after the Nishtha scheme, you will find that all these topics which were mentioned previously, they have been covered by me here. Let me just show you. ये रहे सारे. 60 years of Goa's accession to India, 50 years of 1971 Indo-Pakistan War, the year of 8th census of independent India, India's turn at BRICS presidency, Chandrayaan 3 mission, and Haridwar Mahakumbh. All of these things have been included so that you do not have to rush forward with any other source. You can read it from one place. Notes इसी टाइप से आपको बनाने चाहिए अपने, so that you don't have to refer to any other place once you are done with the notes. And I think those are not even required to explain. They're self-explanatory in nature. Next is Amrut Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. Now, India at 75 is called as Amrut Mahotsav. Why do we call it as Amrut Mahotsav? Because we aim to provide basic necessities to our entire population before then. कई एक बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, ये हम सबको देना चाहते हैं टू एवरीबडी, एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, एनर्जी एक्सेस. Next point is the budget proposal for 2021-22 rests on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and minimum government and maximum governance. इनमें से एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप कल से पढ़ते चले जाएंगे स्टेप्स को. ठीक है.
health and एक बार में I think I'll be able to cover 4 and then 2. So most likely we'll have 2 more classes on budget. And see, these are very short. कल का 8 मिनट का क्लास था, आज भी 5-7 मिनट का ही क्लास हुआ है. Tomorrow I'll again explain you in a manner that it will take like 30 minutes या फिर max to max 40 minutes. उसके बाद अगली क्लास फिर से 15-20 मिनट्स की होगी. एंड इन दैट एवरीथिंग विल बी कवर्ड. एंड इफ पॉसिबल कल ही अगर सही तरीके से तुम लोग थोड़ा सा अगर बजट पढ़ लो जो मैं बोल रहा हूँ, इफ यू गिव इट अ रीडिंग ऑन योर ओन, आई थिंक इट मेक्स हाफ माई जॉब इजियर एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर बजट टुमारो इटसेल्फ. तो थोड़ा सा कोऑपरेशन रखना सो दैट वी विल बी एबल टू कवर इट अप. काम समझ में आने वाला होना चाहिए, घसीट के मत लाना. आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट, डोंट रीड, read so that you can understand.